Welcome back to Game on Hay. Time now to look in a little bit more detail at some of the performances that have got these sides to where they are today in this tournament. And we're going to start with England, who play the second game tonight in Sharjah. That's going to be live, by the way, at 7 o'clock this evening. So we'll start with some of the performances that have got England to the top of the group. 4 games played so far, 4 wins, 8 points, all looking very good so far. But of course tonight could be just that little bit different. You never know in this competition. Now the first man we're going to try and look at is Jos Buttler. The last time they played at Sharjah was the game against Sri Lanka. Jos Buttler starred with an extraordinary 100. He had to work mighty hard early on, and the Sri Lankan bowlers did all the right things early. There was the odd gap like this, the odd time where the timing would get the ball through the infield, but it was towards the end of the innings that things changed. And this was just, Viv, this was a classic example of someone hanging in there long enough to get the timing, to work out what was needed, and to make the most of it towards the end. Well, what I think he did as well as anyone is the fact that he did soak up a few balls as well, and the longer that he stayed there and he had a look at the crease, you can see his batting became much better and better. And towards the end, that particular flurry was just magnificent to see, because spending time at the crease, this means that he would have had a good look, and then when he was able to launch, he was just magnificent. I think it was the perfect sort of a stuff, and I think maybe other players can learn from that time spent at the crease, you can always catch up towards the back end. Yeah, I think in Sharjah that's important. And we're going to have to talk again about the way people bowl at Sharjah very quickly, Aaqib, because we've talked about the lengths. Before that, though, let's just have a look at where Jos got his runs. There's a lot of stuff on the leg side, so there's quite a lot there between straight and deep mid-wicket. A few clever shots behind square, a few through the offside, but predominantly very much onside, as I say, between straight and deep mid-wicket. And then on the right, you'll see the lengths as well. And just looking at that chart on the right, Aaqib, that 8-metre line that we've talked about so often, we need to talk about it one more time. Yeah, because, again, it's your routines. The time ball banged on short of a length, you tend to go back on the back foot. And in Sharjah, skidding through, staying low, and there's no chance of getting runs on the back foot. It's not that one morning you change your tactics or your techniques. So that's why if you spend some time there, try to stay on the front foot, even though the ball is 8 meter, and then eventually the only one way scoring runs in Sharjah is playing big shots and straighter and mid wicket, because if you play a conventional cricket in Sharjah, you won't get more than 6 and over. So that's what we have learned. But for the bowlers, definitely 7 to 8 meter. If you have pace, then you're there. और अगर ये ग्राफ हम दोबारा दिखा सकें, क्योंकि डीप एनालिसिस के लिए हमें राशिद भाई के साथ जाने की ज़रूरत है, तो इस जॉस बटलर का ग्राफ अगर हम दोबारा दिखा सकें. देखिए, इसमें शुरू की 3 बॉलें आपने हाइलाइट्स में देखी होंगी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, दोनों पाँव जुड़े हुए थे, यहाँ से खेल रहा था. 3 बॉल, एक पॉइंट पे चौका हुआ, एक कवर पे 2 रन बने और एक मिड ऑफ पे उसने ऊपर से मारी है बस. उसके बाद ओल्ड बॉल के साथ उसने ब्लैक क्लियर की है, उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया है. तो क्या अर्ली ऑन उसको पिच इट अप यहाँ पे बॉल करें तो उसको इश्यूज आएंगे बटलर को, इसीलिए ये टॉप ऑर्डर टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप हुआ है. उसके बाद के 6, 7, 8 नंबर इन टेस्ट क्रिकेट ये खेल रहा है. अदरवाइज जो बर्न्स है या जो इंग्लिश ओपनर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में बहुत सक्सेसफुल नहीं है. ये बेटर प्लेयर है, लेकिन टेक्निक इसको इसकी अलाउ नहीं करती कि टेस्ट क्रिकेट में ये ओपन कर सके. कोई भी टीम इसको ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी आगे बॉल पिच करे, स्विंग हो, तो अर्ली ऑन बहुत ज्यादा चांसेस है, इवन बाहर निकले या अंदर आए. लेकिन क्या है, हर कोई शॉर्ट ऑफ लेंथ इसको करता है. शॉर्ट ऑफ लेंथ इसके ये यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से मोस्ट रन 90% रन ऑन साइड पे हैं इसके. तो वो देखना पड़ेगा टीम को, हर कोई इसको फॉलो कर रहा है. इसको जितना फॉलो करेंगे ये फॉलो करवाएगा बॉल फॉलो करवाएगा, और इनका हेड बड़ा स्टिल रहता है उस सारी. अब ये देखें ना कि पॉइंट से इधर कितने रन बने, 0 या 4 रन बने. कवर साइड पे कितने रन बने, 5%, और 90%, 95% ऑन साइड पे हैं. तो इसका मतलब है आपको ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी बॉल करनी पड़ेगी. उमर, आप ऐड कर दें, फिर मैं ट्रांसलेट. जी बिल्कुल, इसमें राशिद भाई की बात में बहुत गौर से सुन रहा था, लेकिन इसकी
वो इसलिए इसका मिड ऑन और मिड विकेट स्ट्रॉन्ग है। अगर आप नॉर्मल बैट्समैनों को देखें ना, अगर वो उसको जो हम हार्ड लेंथ की बात करें, जिस तरह आकिब भाई ने भी कहा ना कि हार्ड लेंथ 6 to 8 मीटर वो उनको प्रॉब्लम करती है, लेकिन इसको प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सीधे बल्ले के साथ ऐसा नहीं कर रहा, ये विप कर रहे हैं इस तरह। तो मेरे ख्याल से ये इसको एडवांटेज है। और जब इसको फोर्थ स्टंप पे ये बॉल जब मिलते हैं ना, तो नॉर्मली बैट्समैन इसको कवर की तरफ ये इसमें इतनी क्वालिटी इसके रिस्क में इतनी जाने ना कि ये इसको ऐसे उठा के मिड विकेट पे मारता है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप हार्ड लेंथ को हिट करें, लेकिन फिर इसको फॉलो करो क्योंकि ये अपने लेग को क्लियर करता है और वहां से ये जो शॉट मारता है ना, ये बहुत ज्यादा इस पे उसको आज आप कप्तान की उसके वो जा रहे हैं एनालिसिस के। कप्तान ने बात अच्छी की, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये नॉर्मल बैट्समैनों की तरह नहीं है कि सीधे मिड ऑन में सीधे बल्ले के साथ ये ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, विप करते हैं क्या, टुल्ला मार रहा है खुलाड़ा चले जी, बड़ी अच्छी एनालिसिस आज हमें मिली। Rashid is saying that Buttler has not many runs on the offside initially, so that's why he has struggled in Test cricket at the top of the order. He has generally coming down at number 7, number 8. Most of his runs are on mid wicket and on the leg side because he keeps opening up and the ballers keep following him. So if they keep following him, they have to keep following the ball from to the boundary and have to bring it back. But if they really want to have some say in the match against him, they need to explore that offside. Who would you bowl at Buttler at the start? Which of those South African bowlers would you want to open with? Nokia. Yeah, pace and and even Rabada with his outswing, pitch it up early on. रबाडा ना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी लेंथ पे, अनरेक्स नोकिया कंसिस्टेंट बहुत है अपनी लेंथ के ऊपर, ये वजह है। वरना वो एक चौका खा जाएगा ना तो उसके बाद वो दोबारा रॉन्ग बॉल कर देगा। और वरना उसकी लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट है पीछे वरना बेस्ट क्या है, अर्ली ऑन आउट करें। शमसी को आप करेंगे तो अगर रीड नहीं हुए ना तो ये मारेगा, जरूर मारेगा। तो एक आधा ओवर शमसी से ट्राई जरूर करना है, मैचअप जो होता है ना वो करना चाहिए। मैचअप की भी बात हम जरूर करते रहेंगे। और अब हम जाते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स की तरफ, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप में। अगर हम देख सकें इंग्लैंड के बॉलर्स, यहाँ पे मोइन अली 3 दफ़ा बॉलिंग की है, 6 विकेट्स लिए हैं, बहुत ही इकोनॉमी इनकी ज़बरदस्त रही। सारे बॉलर्स की सिवाय टाइमर मिल्स के जो विकेट्स में ज़्यादा हैं पर उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ऊपर है, पर बाकी सब बॉलर्स को आप देखें 6 से नीचे इनकी इकोनॉमी रही है। एक चीज इसमें देखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉलर है वो लिविंगस्टोन है, नंबर 7 बॉलर हो गया इनका ना। ये मैचअप में लेके आया लेकिन सक्सेसफुल देखें 5.8 इकोनॉमी रेट है इसका, 4 विकेट्स भी ले लिए। तो ये बोनस है इंग्लिश टीम के लिए इन यूएई। So you want to say something about the English bowlers? Yeah, I'd love to. Yeah, please ये इसको वापस लगा slide back up again. The point's already been made on the left wing here that if you look at those figures, the economy rates, they are all very, very good. Mills, ironically, who is a specialist T20 bowler and a specialist finisher, so that can sometimes change your economy rate because you're there at the end of the innings there, so that pushes it up. But he's been the most expensive. He's the man who's injured. So they need someone to come in, which could be Mark Wood, who's been nursing this ankle injury. Could be people like someone like, say, David Willey, who's another left armour. I'd probably favour Mark Wood if he's properly fit. But I think he's done his job. Those figures are good. He's attacking bowler in 4 games, got 7 wickets. Yeah. So you need somebody who attack the stumps or aggressive bowler, attacking option, and then doesn't mean how many you gave it away, but if he's taking the wickets, I think he's done his job. And Mark Wood I would like to see him back because if he's back at this stage, it's a bonus for England. I'm a fan of Mark Wood because he lets it go. He just comes in with express pace. Same mindset. Yep, and he just comes. I just love to see Mark Wood in the team because he brings that wicket-taking factor to the party. Yeah, no, he's okay. Well, we'll see what the England management think about that. But I mean, I'd agree. He's very effective. He's very enthusiastic. He's got that pace that we've seen can make a difference, even in Sharjah. Now, the bowlers that we've picked a couple out actually. Starting actually with Chris Jordan, because he is a man again who is a specialist in this form of the game. Very experienced now. Varies his lengths and paces well.
We looked at those figures just now. He's one of those England bowlers averaging around about 5 or so in terms of the economy rate. But he's vitally important because he can bowl, for instance, that Yorker there, that Yorker there. Those are the balls that you've got to get absolutely right. I think he's the most end. consistent fast bowler in T20. One of the most consistent. He's always in the control, starting with middle overs and the death. So accurate with his Yorkers and variations. I think every team wants to have one bowler like him, like Bumrah, Haris. These are the special bowlers because death bowlers win you matches. When you look and see, take for instance, you see a Chris Jordan towards the end of the innings. He's so accurate. Yeah. And your mind's got to be in a good place in order for you to accomplish that. We would have seen the Sri Lankans towards the back end. And they just lost the plot, in my opinion. As you would have said, gave Buttler opportunities for him to work the ball on the leg side. Didn't quite execute as well as they should. And the thing about that is surely that if you're good enough to bowl a Yorker, as we saw in those examples there, then that's still fine. If you get it wrong, That's when you're in trouble. then you're in trouble. Yeah. Then you've got this other thing about the length. Do you then bring it back again, pitching it on that 7-8 metre line? So I mean, that's the dilemma for all these guys in Sharjah. But he's got the ability, and actually apart from anything else, one other good point about him, he's one of the most spectacular fielders in a very good fielding Yes, team. and I think England has shown that time and again in this tournament that it won't be wrong to say that they are the best fielding side of this tournament. Even though Pakistan is not far behind, they have taken their catches, but on the whole, if you see the ground fielding, the throw, the ground covering, everything, I think England is a complete package. Yeah. What about spin? Yes, I think the spinner we would want to talk about is Adil Rashid. He has been really good, backed by the captain Owen Morgan. Rashid भाई बहुत ही ज़बरदस्त bowling है इनकी, googly भी ज़बरदस्त, flipper ज़बरदस्त. Adil Rashid, no doubt, one of the best bowler world का, not England, world का. मैच को चेंज करता है ये इम्पैक्ट प्लेयर हैं और चाहे वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं या पावर प्ले के बाद बॉलिंग कर रहे हैं या लास्ट ओवर डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं जो कि इयन मॉर्गन के फेवरेट बॉलर जो हैं इस टीम में वो आदिल रशीद हैं. अगर थोड़ा सा मैं जॉर्डन का बात करता हूँ, हमारे टॉप 10 जो आईसीसी की रैंकिंग में 8 स्पिनर्स हैं, ओनली 2 फास्ट बॉलर्स, आंद्रे नोकिया एंड जॉर्डन नंबर 9 पे हैं. तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी फास्ट बॉलर का टॉप रैंकिंग में आना, स्पेशली इन T20. लेकिन आदिल रशीद की बात हो रही है, जो फ्लिपर जो इम्प्रूव्ड हुआ है इस वर्ल्ड कप में जो नज़र आ रहा है, इनका फ्लिपर फॉर द लेफ्ट हैंडर बहुत ही सक्सेसफुल बॉल है और जितने भी इन्होंने लेग बी फोर किए हैं बैकफुट पे ले गए हैं. इसका मतलब है लेंथ वो रीड नहीं हो रही, लेंथ कौन सी आगे जाए या बैकफुट पे जाए. मोस्टली जब बैट्समैन बैकफुट पे आया उसको लगी है पैड्स पे आके, तो ये सक्सेस है आदिल रशीद की. और यूटिलाइज किया है या बिलीव किया है या मॉर्गन ने अपने प्लेयर्स के ऊपर, चाहे वो मोइन हो, चाहे वो आदिल हो, चाहे लिविंगस्टोन हो. श्रूड कैप्टन है जिस तरह से वो यूटिलाइजेशन कर रहा है अपने प्लेयर्स के लिए. बिल्कुल. और शारजा की पिच क्योंकि लो भी है तो वेरिएशन इनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लाइट नहीं है जैसे लेग स्पिनर्स की होती है T20 में, लो ट्रेजेक्ट्री से ही बॉल करे, कितने इफेक्टिव हो सकते हैं. ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी है. आई थिंक अब आप इसको किसी भी सरफेस पे खिला दे, अभी अगर ओवर द ईयर्स देख ले, इसकी परफॉर्मेंसेस देख के रैंक में टॉप 3 नंबर रैंक पे है, तो इसलिए वो है कि ये हर जगह पे परफॉर्म कर रहा है. ये नहीं कि शारजा ऑब्वियसली एडवांटेज होगा शारजा पे, जिस तरह के पिचेस है उसकी जो वेरिएशन है ऑफ कोर्स उसको एडवांटेज है. और लेकिन अगर आप अगेन इसको देखें तो वन ऑफ द स्ट्राइक बॉलर इंग्लैंड के लिए, और जो सबसे अच्छी बात है कि उनका कैप्टन बहुत क्लेवर है, वो बहुत ज़्यादा शार्प है, वो अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता है. अगर आप स्टार्ट के मैच में मीना अली को अर्ली ऑन लेके फिर अगले मैच में उससे बॉल ही नहीं कराए, लेकिन हाँ तो ये है कि मैचअप कर रहा है और विकेट के हिसाब से जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज कर रहा है बॉलर. क्रेडिट जाता है मॉर्गन को भी कि वो अपने बॉलर किस तरह यूज कर रहे हैं. बिल्कुल क्रेडिट जाता है मॉर्गन को. एंड वी आर गेटिंग कैरिड अवे बाय प्रेजिंग इंग्लैंड टू मच. सो यू थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक? You can never do it. You can never do it. No. They've done. I think they've done enough for us to give them all the stuff that is needed.
they have been the best team so far in terms of their performances, and you never know, there may be just that bad match around the corner. What I love about Viv is this sort of, He builds it up. but there was that sort of, sort of from up here to down there. But if he's got a point to make, he'll make it once or twice, and then again, and hopefully his wishful thinking from his point of It view. could happen. It could happen. Anything can happen. Yeah, it could happen. Anything can happen. But, I prefer Sana's hospitality and being nice to him. And things. Coming back to Adil, man, I think he's a star. Yeah. I think he's definitely a star. Whoever felt, maybe in the modern day, for those of us who would have played, that we have always felt leg spinner was maybe had a part to play in the longer version of the game. But all the spinners that we've seen, the Zampas, the Shamsis, and all these folks, they are the individuals who are bringing whatever to the party. And why I think so? That batters today are not reading or picking that well. Well, that's very true. We saw the footage And especially we saw the footage against West Indies, and they did not pick it at That's all. right. That's correct. That's correct. One each. Yeah. Okay, well, yeah, 1-1. Okay, 1-1. Good time to stop. We'll take a break. More coming up soon. It's Game on Hay. Game on,